Greetings from SDMIC Classes. Difference between bookkeeping and accountancy. Subscribe my YouTube channel and watch videos related to finance, accounts, business organization, business management, etc. Learn accounting in easy way. This 6 videos I already uploaded to learn accounts and how to do accounting from the lowest level of bookkeeping to up to finalization. Now in this I will explain the difference between bookkeeping and accountancy. Please refer my previous 6 videos related to accounts, starting from the base to up to finalization. I have given in 6 videos in 6 parts. So you can refer that. Now, what is accounts? This already I have given my first video about accounting. Again, let's go through that. What is accounting in brief? Very brief. I'll just brush up the memory. Bookkeeping is the classifying, summarizing and systematic recording of business transaction in the registers or in the books of accounts. Now, what is an account? An account is a record in the general ledger that is used to sort and store transactions. We have explained what is transaction, what is entry, everything we have explained. Now it is not necessary to explain again and again. Now, what is the definition of account? An account is a record in an accounting system that tracks the financial activities of a specific asset, liability, equity, revenue or expense, various types of accounts. What is accounting? The process of recording in the books are called accounting. So the accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and reporting the transaction. So once the bookkeeping is done, it is entered into the registers and it is properly sorted out and entered into the register, and then the summarizing, classifying and then analyzing, interpreting and reporting, that is more important. So the objective is to extract the results of the activities of the business and prepares financial statements and pass to the concerned authorities. Now we follow double entry system of accounting as universally accepted accounting system which is convenient and comfortable. We have already explained all these things. ये सब हम लोग ने बताया था. बुककीपिंग क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये सब चीज़ हम लोग ने बोला एक्सप्लेन किया था. So now let us move to the other part. Why we need accounts? Accounts का ज़रूरत क्या है? Regardless of the size of a business, accounting is a necessary function for decision making, cost planning and measurement of economic performance. So what is measurement of economic performance? Economic performance is the performance of the business over a period of time. Its activities, whether the business gain or lost, that means earned profit or incurred loss in that period. That is, the business has to make a trading profit and loss account, and also the net financial position of the business, that is to prepare a statement called balance sheet. A bookkeeper can handle the basic accounting needs. We already explained that. It means that bookkeeping is a basic function, and a senior accountant can do much more up to finalization, etc. But much more higher seniors and a chartered accountant should be utilized for a larger or more advanced accounting tasks, means reporting, tax auditing, etc. Auditing, statutory auditing, all these purposes this chartered accountant is required. Important types of accounting for business are financial accounting, managerial accounting and cost accounting. This already we have explained. Now financial accounting deals with the financial statements. Managerial accounting helps management teams to take business decisions, while cost accounting helps business owners to decide how much a product should cost and how to maintain the inventory and all these things. That is very important thing.
Now, the difference between bookkeeping and accountancy. The earlier part we already explained in our previous videos. Now, in this video, I will explain the difference between bookkeeping and accountancy. Difference between bookkeeping and accountancy. I have just tabulated this, and there are 9 points. So we will explain one by one. The left side column, it is bookkeeping, and the right hand column side accountancy. So the points regarding the bookkeeping is given in the left side, and the related to the accounting is given in the right side. So we can compare that. What is the difference? This is a comparison. Actually, it's actually bookkeeping is the first step of accounting. Without bookkeeping, the accounting won't be done, because first step is bookkeeping, and then it follows accounting works. So now let us see the compare, and once we compare it, it is easy to understand. So one should know what is the difference between bookkeeping and accountancy. Everybody thinks that bookkeeping, accountancy means it is something different. It is same, but at the same time there is a slight difference. Bookkeeping is only the first part, the basic part, and accountancy is the advanced part. That is the thing. So let us see. Once we go through this, it will be very easy to understand. ये जो प्रॉपर तरीके से समझने के लिए जो दोनों का जो फ़र्क मालूम पड़ेगा तो अच्छा तरफ से समझ में आ जाएगा. तो लेट अस सी, लेट्स स्टार्ट. पहला मीनिंग. फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ बुककीपिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांसैक्शन, whereas in accountancy, recording, classifying, summarizing, analyzing, reporting and interpreting the financial data. यहाँ financial data को मीनिंग में financial जो bookkeeping में financial data को क्लासीफाई करके रिकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं. फिर अकाउंटेंसी में आएगा तो क्या होता है, उसको ये जो एनालाइज करके रिपोर्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, फाइनेंशियल डाटास को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसका जो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वो बना लेते हैं उसको. और स्टेज क्या है, this is a primary stage, means bookkeeping is a primary stage in accounting, which also a base for accounting. हमने जो बताया था ऐसे बेस है, बेसिक. द फर्स्ट स्टेप इज bookkeeping, so it's a base. Second, this stage of the accountancy is secondary, means the first stage is bookkeeping and second stage is accountancy. So accountancy is the secondary or advanced stage, includes analysis, reports making and interpretation. So now what is the objective of bookkeeping is to keep records of all financial transactions in a chronological order and in a proper and systematic manner. That is the objective of bookkeeping. मतलब वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड जो भी होता है उसको क्रोनोलॉजिकल मीन्स प्रॉपर तरीके से ऑर्डर से अरेंज करके सिस्टमेटिकली एंट्री करना, रिकॉर्ड करना और मेंटेन करना. और वेयरएज इन अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पास relevant information to the concerned authorities is the objective of accountancy. Accountancy में ये जो इधर से जो बुककीपिंग होने के बाद में वो जो डाटास को जो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पास द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़. जो भी अथॉरिटीज़ को रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा अथॉरिटीज़ है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था. जिसको भी ज़रूरत पड़ता है, जो भी अथॉरिटीज़ को ज़रूरत पड़ता है, वो उसको जो रिलेवेंट जो डाटा जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो तैयार करके we have to provide, that is called that is doing in accountancy. That is the objective of accountancy. For example, the balance sheet बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और मैनेजरियल पर्पस के लिए मैनेजर अकाउंटिंग का जो होता है उनका जो रिक्वायर्ड होता है, और टैक्स पर्पस के लिए अलग से बनाना, ये सब जो है दीज आर द पर्पस ऑफ द मेन पर्पस है अकाउंटेंसी में. सो दैट इज़ अ ऑब्जेक्टिव. Now, what is the responsibility of bookkeeping? Bookkeeping is mechanical and repetitive in character and generally handled by the junior staff. मतलब इसमें तो हाई स्किल का ज़रूरत नहीं पड़ता ना, तो फिर वो जो जूनियर स्टाफ मीन्स जो एंट्री स्टाफ जो रहता है, जो फ्रेशर्स जो एंट्री होता है, उनसे जो इसमें जो अकाउंटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है वो एंट्री जो अपॉइंटमेंट होके आता है, दे विल बी मीन्स गिवन द
बुक कीपिंग वर्क मीन्स इसे मैकेनिकल प्रोसेस मीन्स मतलब ऐसा करो करके बोलेगा तो ये जो देखो इधर ऐसा देखे ऐसा एंट्री मारो ऐसा ऐसा करो, दिस आर द थिंग्स टू बी नोटेड, ऐसा एक एक एक, एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो एंट्री करते रहते हैं. दैट इज द सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज yes, this primary accounting work. Bookkeeping is mechanical and repetitive in character and generally handled by the junior staff. Junior staff handle करता है. Whereas accountancy का responsibility क्या होता है? Accounting requires skill, expertise, इमेजिनेशन एंड इज लुकड आफ्टर बाय सीनियर अकाउंटेंट्स. जो भी थोड़ा एक्सपीरियंस हाईली थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद में अकाउंटिंग जो वर्क्स में आ जाता है ग्रेजुअली मस्ट अप. एंड हायर अकाउंटेंट्स जो ज़्यादा डिटेल में लाइक मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन मीन्स वर्क के लिए जो अकाउंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सेगमेंट हो जाता है. भले वन एट द सेम फाइनेंशियल अकाउंट्स ये सब एक ही होता है, लेकिन उसमें से जो अपना अपना हिसाब से जो भी तरीके इसके लिए चाहिए उसके हिसाब से उसका तैयार करना. और फाइनलाइजेशन ये सब थोड़ा एडवांस लेवल में, तो दे नीड एटलीस्ट एक्सपीरियंस एंड स्किल एंड एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड इन दैट फॉर दैट. सो अकाउंटेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्किल, एक्सपर्टाइज, इमेजिनेशन एंड इज लुक्ड आफ्टर बाय द सीनियर स्टाफ्स. ना आउटकम्स क्या होता है बुककीपिंग में? जर्नल and ledger are the outcomes of bookkeeping. मतलब subsidiary register, journal register or subsidiary registers are maintained and that is to be posted into the ledger. Means suppliers और customers ledger होता है और general ledger होता है. तो वो ledger में जो पोस्टिंग करना तक उधर लिमिटेशन है, उसका आउटकम उतना ही रहता है. वेयर इज इन द आउटकम ऑफ अकाउंटेंसी इज टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर द आउटकम ऑफ और द रिजल्ट ऑफ द अकाउंटेंसी. द मेन पर्पस वही होता है. मेन पर्पस देयर आर वेरियस थिंग्स ऑल्सो टू बी मेड. मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैनेजरल अकाउंटिंग के लिए जो डिसीजन मेकिंग के लिए उसका प्रपोज ये बनाते हैं, चार्टिंग होता है, टैबुलेशन होता है और बहुत सारा थिंग तो है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है और एनालिसिस होता है, डिफरेंट रेशियो एनालिसिस होता है और टैक्सेशन वर्किंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है. देयर आर सेवरल थिंग्स आर इन्वॉल्वड इन दैट, बट द मेन आउटकम इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इज़ द मेन आउटकम. नो पीरियड क्या होता है इधर ऑन बुक कीपिंग में? ऑन गोइंग एंट्री वो कंटिन्यू चलते रहेगा. मतलब देयर इज़ नो वो एक जनरली 12 मंथ्स का होता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक. एंड आफ्टर दैट वो क्या होता है वो कंटिन्यू होता रहता है. वेयर एज the ongoing entry of recording, that is date wise records are made available in bookkeeping, whereas in general in accountancy period is generally 12 months. और 12 months में क्या होता है यहाँ मीन्स इन बुक कीपिंग में वो 12 महीने के महीने में दूसरा रजिस्टर आता है, वो उसमें एंट्री वो जो प्रोसेस चालू रहता है. वेरस इन अकाउंटेंसी में वो जो 12 महीने का सेपरेटली उसको वो 12 मंथ्स जनरली वन अकाउंटिंग ईयर इज 12 मंथ्स, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंडिंग ऑन 31 मार्च. सो जनरली 12 मंथ्स है. तो वो 12 मंथ्स का जो होता है उसका डिटेल्स जो एक्सट्रैक्ट बनाना है, व्हाट इज द मेन एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. सो जनरली 12 मंथ्स आर द एंड द डिटेल्स ऑफ द एंटायर ईयर आर मेड अवेलेबल इन अकाउंटेंसी. सो दैट विल बी मीन्स देन वो स्टार्टिंग होने के बाद में उसके एंट्री होते हैं, उधर क्लोजिंग हो जाता है, देन स्टार्ट द नेक्स्ट ईयर लाइक दैट इट इज़. Now, 7th point is bookkeeping में analysis. The process of bookkeeping does not require any analysis. You know that, no, means it is a basic entry. There is no need of उधर analysis हो ही नहीं सकता है, कर भी नहीं सकता है. Only that means that that just a mechanical process जो entry करते रहता है, primary level है, basic step. तो यहाँ उसमें analysis नहीं होता है. Whereas in accountancy, based on the information of recorded data, accountant analyze and interpret the data and then compiles into required reports. तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ जो बुक कीपिंग में जो एंट्री किया हुआ वो डाटास को, अकाउंटिंग डाटास को प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट करता है और उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करके करता है और जिसको रिक्वायर जो है फॉर फाइनेंशियल इसके लिए जो ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाता है. कॉस्टिंग इसके लिए वो उसके अलग से तैयार कर लेता है और
मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अलग से ये जो रिपोर्ट बना देते हैं. सो दिस एनालिसिस, उसका जो एनालिसिस, फॉर एग्जांपल अभी वो मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल जो भी मार्केटिंग है, मार्केटिंग डाटास को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में मार्केटिंग का डिसीजन करना है. सो ये जो उधर एनालिसिस होना ज़रूरी है. सेम वे जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, वो प्रोडक्ट्स जो कैस हाउ इट इज़ मूविंग, ये सब ये करने के लिए वो डाटास को एक्सट्रैक्ट करके उसके हिसाब से बनाता है, डिसाइड करने के लिए उसको क्वालिटी में डिफरेंस फ़र्क पड़ने का है. दीज आर ऑल रिलेटेड. तो उसका जो रिक्वायर्ड डाटास को एनालाइज करने के लिए ये जो अकाउंटेंसी रिक्वायरमेंट अकाउंटेंसी यूज़ होता है. Now, eighth point, decision making. Any decision based on the data from the bookkeeping is not possible for the management. तो bookkeeping में decision making होता है? नहीं, bookkeeping में decision making नहीं होता है. Whereas in accountancy decision making इधर होता है. The critical business decisions are possible based on the data and reports provided by the accountant. जो अकाउंटेंट जो प्रोवाइड करता है वो डाटा का बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैंने बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, जो मैनेजरियल अकाउंटिंग होगा, जो डिसीजन मेकिंग, कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कितना मूवमेंट होता है, क्या कॉस्टिंग रखने का है, क्या प्राइसिंग रखने का, सेलिंग प्राइस क्या रखने का है, और क्या आगे करना है, किधर मीन्स जो डिफरेंट होता है उसको क्या करना है, क्या व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटस, हाउ टू इम्प्रूव दैट एंड व्हाट आर द फंड्स रिक्वायर्ड. ये सब डाटास को ये जो एनालाइज करके जो उसको डिसीजन मेकिंग ये अकाउंटेंसी में होता है. So accountancy is very important. So critical business decisions are possible based on the data and reports provided by accountant. Now, skill required. Bookkeeping doesn't require any analytical skill. बुककीपिंग में कुछ स्किल होता है क्या? नहीं है. उधर खाली जो बोलेगा वो जैसा मीन्स जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो एंट्री करते जाएगा. दैट इज़ ओनली थिंग. देयर इज़ नो स्किल रिक्वायर्ड. स्किल उसमें ज़रूरत ही नहीं है. Whereas in accountancy requires analytical skill. ये इतना सारा जो मैंने बताया था, बहुत सारा जो हम लोग एनालिटिकल वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं. और पीरियोडिकल मीन्स मतलब 1 year 2 year और या फर्स्ट मंथ टू सेकेंड मंथ और लास्ट ईयर टू दिस ईयर और पीरियड ऑफ 1 year 2 year 3 year 5 years या ये और कंपैरेटिवली सेम टाइप ऑफ बिजनेस का डाटाज, ये सबको एनालिसिस करने के लिए इसमें एनालिटिकल स्किल अकाउंटेंसी में ज़रूरी है. सो अकाउंटेंसी रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स. आई थिंक ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा. ओके, नाउ वंस अगेन वी विल गो थ्रू दैट. बुककीपिंग में मीनिंग बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो मीनिंग होता है, मीनिंग स्टेज, इस सब ये जो 9 पॉइंट्स समझ में आ जाएगा तो यू कैन जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट. मीनिंग, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटकम्स, पीरियड, analysis, decision making and skill required. So this I hope you understood this, and if you don't understand, watch again and again, you will come to know that it is not that much difficult. Now let us conclude the difference between bookkeeping and accountancy. Okay, now accounting profession has good scope. You know that means accounts का बहुत सारा scope है. Growth can be from a voucher clerk and can reach to a very high level through continuous efforts and learning. Learning accounts and commerce can motivate individuals to do business and become an employer rather than becoming an employee. Entrepreneur बनने का भी means inspiration हो जाता है. Your great desires can only be fulfilled if you understand the importance of accounts, commerce and become an entrepreneur. तो मतलब बहुत बार ये बताया है, मतलब अभी समझो ये कोई सैलरी वाला आदमी रहेगा तो उसका सैलरी का लिमिटेशन हो जाता है. वेयरएज इन ए बिजनेस अगर इम्प्रूव होता है मीन्स मतलब आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो उसका जो इनकम का लिमिट नहीं होता है, कितना भी आ सकता है. जिसका भी उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस के अनुसार इनकम भी उतना बढ़ता है. तो जो डिसाइड्स अपना फुलफिल करना रहेगा तो बिजनेस वाला मीन्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, या कोई हाई लेवल प्रोफेशन में जाएगा तो भी बहुत सारा अपना मीन्स अपना डिसाइड्स फुलफिल कर सकता है, अकम्प्लिश कर सकता है. Now please subscribe my channel, comment and share for more such videos.
Apart from this, I am also providing free recorded classes for 11th and 12th standard HSC students. At present, recording bookkeeping and accountancy subject this year. Next year, I will add organization of business and management subject also. Now, these are uploaded on my YouTube channel, SDMIC Classes. Please share the video to reach maximum students, because that will help many students. Thank you for your support.